Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Medibill Pro. So today we are going to start our 43rd lecture in basic medical billing course. So I hope you guys will be fine and doing great where you have been. So let's start the lecture, and in this lecture we are just going to read all about the Medicare Advantage and Medicare Supplement. So what are the key differences and the similarities between these two plans? Okay, so while choosing these plans you have to be careful because these two plans contains different kind of a benefits, different kind of a costs, different kind of a instructions, different kind of a stuff. So while choosing different kind of a things, you just need to be focused, you just need to be get different kind of a details while choosing these plans. If you're residing in a USA, then you have to be very careful because these two plans can impact your income, impact your life. So I'm just going to provide you all kind of a data that can provide you different kind of instructions, different kind of details about these two plans while choosing these plans. So what is Medicare Advantage plan and what is the Medicare Supplement plan? So we are just going to discuss all this one in this lecture. So without wasting time, I'm just going to start this lecture. So here you go. So our lecture will be on Medicare Advantage or Medicare Supplement. So which plan you are just going to choose? So let's see the details. So first of all, this is the Medicare Advantage plan. Okay, so a Medicare Advantage plan, also known as Medicare Part C, is an alternative to original Medicare Part A and Part B offered by private insurance companies approved by Medicare. Okay, so you guys know that this is a Medicare plan. So काफ़ी सारे plans ऐसे होते हैं, काफ़ी सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो मेडिकेयर के प्लान्स को मीन्स ये है कि ऑप्ट करती हैं, ठीक है, उनकी अंडर ही काम कर रही होती हैं और उनसे अप्रूव्ड होती हैं, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू एक्ट लाइक अ मेडिकेयर प्लान। ठीक है, मीन्स मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स होते हैं, उसके अंदर मीन्स मेडिकेयर के जितने भी एडवांटेजेस होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। उसके साथ साथ काफ़ी सारे उनके खुद से भी मीन्स ये है कि वो काफ़ी सारे प्लान्स या काफ़ी सारे बेनिफिट्स उनके अंदर इंक्लूड कर देते हैं। ये इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू ऑफर द प्लान्स पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, जैसे हमने देखा कि ये मेडिकेयर पार्ट सी प्लान होता है, इसके अंदर लेकिन पार्ट ए और पार्ट डी भी आ जा बी भी आ जाते हैं। ओके, सो नॉर्मली इसके अंदर पार्ट डी भी होता है, लेकिन ये है कि दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज। सो वी आर जस्ट गोइंग टू see that what kind of a scenarios can be differentiated from different to the Medicare one. Okay, so basically ये क्या होते हैं, Medicare की approved plans होते हैं, but these are the private ones. But you guys know that if you are eligible, a Medicare person must be 65 or plus 65 years of age. Okay, and if you are below 65, then you have to be means that kind of a person would be disabled or crippled. Okay, उसके अंदर कोई disability होती है तभी वो जाकर Medicare plans को ऑप्ट कर सकता है या वो benefits ले सकता है। अदरवाइज आपकी एज 65 या उससे प्लस होनी चाहिए Medicare का प्लान लेने के लिए। Okay, so these plans provide all the benefits of original Medicare, मीन्स ये जो मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स होते हैं इसके मेडिकेयर के अंदर मेडिकेयर के सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, and often include additional services like prescription drug coverage, Part D, as I mentioned that Part D भी इसके अंदर आ जाता है, dental coverages, VN and wellness programs, इसके अंदर VN आ जाता है, wellness programs आ जाते हैं, और mainly जो dental होता है that is quite expensive in the foreign countries, so that is also included. Okay, जो Medicare Advantage plans होते हैं। Okay, so next we see here are key points about Medicare Advantage plans. मैंने इसके कुछ key points बनाए हैं जिससे काफ़ी easy हो जाएगा, then you guys just get the knowledge of how and what is Medicare Advantage plan works. Okay, so Medicare Advantage plan का first one है key point coverage. Means coverage में इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें cover कर रहा होता है ये Medicare Advantage plan. So Medicare Advantage plans are comprehensive. Comprehensive means it includes a lot of kind of things that only Medicare doesn't include. इसके अंदर Medicare Advantage के प्लान के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो Medicare के अंदर भी नहीं होती. So they combine hospital coverage Part A आ जाता है and medical coverage Part B in one plan. इसके अंदर Part A भी आ जाता है, Part B भी आ जाता है. Okay, so like hospital coverage आ जाता है, medical coverage आ जाता है. Many also include prescription drug coverage Part D भी इसके अंदर include होता है. Okay, Medicare Advantage plans के अंदर. Okay, so next one is private insurance. Unlike original Medicare, which is administered by the government, okay, Medicare Advantage plans are offered by private insurers who are approved by Medicare. Okay, they receive payments from the government to cover the cost of your care.
So there would be different private insurance companies which are just going to cover the different kind of a Medicare Advantage plans. Okay, ठीक है, ये Medicare के अलावा काम कर रहे होते हैं, but they are just going to perform, or they are totally approved by Medicare, and they are having different kind of additional benefits rather than the Medicare. Okay, original जो Medicare है उससे हट के इनके पास काफ़ी सारे और भी plans होते हैं. ठीक है, we are just going to cover different kind of a stuff today. So in this lecture we will just see that what kind of other kind of a benefits that are included rather than ओरिजिनल मेडिकेयर. ओके, सो फिलहाल इसके अंदर मेडिकेयर का पार्ट ए भी आ जाता है, पार्ट बी भी आ जाता है, ठीक है, मेडिकल आ जाता है, और पार्ट डी इसके अंदर प्रेस्क्रिप्शन भी आ जाते हैं. और हमने जैसे कि देखा इसके अंदर वीएन आ जाता है, डेंटल आ जाता है, और वेलनेस के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज एडिशनल बेनिफिट्स, और देखते हैं कि इसके अंदर मेडिकेयर के एडवांटेज प्लान के अंदर कौन कौन से एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं. दो these plans often offer extra benefits not included in original Medicare के अंदर कुछ ऐसे plans होते हैं जो included नहीं होते, बट वो भी इसके अंदर आ जाते हैं. ओके, सो इसके अंदर देखते हैं कि एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं. these plans often offer extra benefits not included in Medicare Advantage. So the next one is additional benefits. These plans offer extra benefits not included in original Medicare, such as dental, vision, hearing, fitness programs, and even transportation services as well. Transportation services का हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर, those were included in HICPICs. Okay, हेल्थ केयर कोडिंग्स के अंदर वो आ जाती थी, rather than मीन्स ऐसे सर्विसेज जो CPT के अंदर नहीं आती, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी के अंदर नहीं आती, वो HICPICs के अंदर आ जाते, लेवल 2 में चीज़ें आ जाती थी. ओके, सो एनी हाउ, सो मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स जो होते हैं वो ओरिजिनल मेडिकेयर से हटकर इनके काफ़ी सारे एडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि वेलनेस आ जाता है, डेंटल आ जाता है, वीएन आ जाता है, फिटनेस के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. नेक्स्ट इज नेटवर्क्स, मींस नेटवर्क्स, कुछ इन नेटवर्क होते हैं, कुछ आउट ऑफ नेटवर्क होते हैं. आप कौन कौन से नेटवर्क के अंदर प्रोवाइडर्स को देख सकते हो, मींस चेकअप करवा सकते हो. सो देयर वुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. लेट्स सी, मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स में हैव प्रोवाइडर नेटवर्क्स, इनका एक नेटवर्क होता है, ठीक है, प्रोवाइडर्स का. डिपेंडिंग ऑन द प्लान यू मे हैव लोअर कॉस्ट्स व्हेन यूजिंग डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स दैट आर पार्ट ऑफ द प्लान्स नेटवर्क. अच्छा, इनके अंदर अब ऐसे प्लान्स हैं, मेडिकेयर एडवांटेज के प्लान्स के अंदर काफ़ी सारे प्रोवाइडर्स होते हैं, अगर आप उनसे चेकअप करवाते हैं, इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू examine yourself from the providers those are in the network of that kind of a plan, then there will be lower costs while checking. Means उनकी आपको बहुत कम पेमेंट देनी पड़ेगी या कम कॉस्ट आएगी, rather than कि हाँ भी आप किसी आउट ऑफ नेटवर्क अगर जाएंगे तो आपको ज़्यादा पेमेंट्स पे करनी पड़ती हैं. Some plans might require referrals to see specialist. इसके अंदर कुछ plans ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आपको रेफरल लेना पड़ता है अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से कि हाँ भी आई जस्ट नीड टू examine myself from that kind of a provider, so can you please refer me to that kind of a provider. Okay, so these were all about the networks, and the fifth one is the costs. Means cost क्या इस चीज़ प्लान की आती है. While premiums for Medicare Advantage plans are often lower than Medigap plans. Medigap means Medicare Supplement जो plans होते हैं उनको Medigap भी कहा जाता है. So इसकी जो premiums होती हैं, okay, वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं rather than Medicare Supplement plan से. They may have co-payments. इनकी co-payments होती है जो fixed amount होती है, जो भी आपको भी चेकअप करवाने जाते हैं, when you are just going to examine yourself, diagnose yourself from a provider, then you need to pay the small amount that is a fixed one, like near about $20 or $30. That depends on the services, or that depend on the different kind of scenarios. So deductibles होते हैं, and out of pocket maximums cost can vary based on the plan and the services used. मीन्स कोई भी सर्विस जो ली गई है उसकी जो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सर्विस लिया, उसकी जो वैल्यूज़ होती है, उसकी को इंश्योरेंसेज या डिडक्टिबल्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी उसके अंदर काउंट होती हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज इनरोलमेंट. इसके अंदर इनरोल कैसे किया जाता है मेडिकेयर एडवांटेज प्लान के अंदर. टू इनरोल इन अ मेडिकेयर एडवांटेज प्लान यू मस्ट बी इनरोल्ड इन बोथ मेडिकेयर पार्ट ए एंड पार्ट बी and lives in the plan service area. Yes, lives in the plan service area. Yes, there are different kind of plans. Okay, services area where different kind of a plans works and different plans doesn't work. Okay, एक तो ये है कि आप मेडिकेयर पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड हों. उसके अलावा ये है कि उसके बाद ये है कि आपको फिर ये आप जो प्लान है उसको ऑप्ट कर सकते हैं. ओके, और ऐसे एरिया के अंदर भी रहते हों जिसके अंदर ये प्लान्स कवर भी होते हैं, इस प्लान्स की जो सर्विसेज हैं वो भी उसके अंदर कवर हो की जाती हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज एनुअल चार्जेस. मीन जो आप ईयरली जो चार्जेस पे करने होते हैं वो कितने होते हैं. दीज प्लान्स कैन चेंज
Coverage and cost annually. It's crucial to review plans details during the annual enrollment period and ensure it still meets your needs. ठीक है, आप लोगों के जो annual charges होते हैं वो भी जाहिर सी बात है चेंज होते रहते हैं, so you need to be careful while choosing different kind of a plans and different kind of a services. Okay, so क्योंकि हर साल इनकी जो annual charges होते हैं वो change होने होते हैं. Okay, so you have to be careful while selecting different kind of a plans. Okay, so Medicare Advantage plans provide an all-in-one option for Medicare coverage, offering added benefits and often lower upfront costs than original Medicare with Medigap. ठीक है, मेडिकेयर जो मेडिकेयर के सप्लीमेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, बट इनकी जो कॉस्ट होती है मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स की इनकी कम होती है. ओके, सो इसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज भी आ जाती हैं. When considering a Medicare Advantage plan, it's essential to review the plan's benefits, network costs, and any extra services provided to ensure it aligns with your healthcare needs and preferences. Yes, if you are a US citizen, then you need to be careful. You need to learn all kind of details about that plan. Okay, so you just need to focus on different kind of scenarios like what would be the cost of this plan, what would be the benefits I am just going to cover, and what are my preferences. Okay, so you just need to be careful while choosing this kind of a plan. If you need different kind of a if you need a routine checkup from the different kind of providers, then you need to be careful that yes, that would be a good plan for you. But if you need far or often these kind of a things, then you should choose another kind of a plans. So always be careful, always go through different kind of a details while choosing different kind of a plans of Medicare Advantage. Okay, so now we are just moving ahead to Medicare Supplement. Like, what is Medicare Supplement programs? Okay, and plans. Okay, so Medicare Advantage versus Medicare Supplement. So let's see what is Medicare Supplement. Yes, the Medicare Supplement programs, also known as Medigap, इनको Medigap भी कहते हैं. Medicare के जो supplement programs होते हैं, is designed to work alongside original Medicare Part A and B to help cover the gaps in coverages. Means ऐसे जो gaps जो Medicare की जो original coverage होती है उसके अंदर जो रह जाते हैं, then there are different kind of plans. Okay, like you can say that Medicare Supplement plans होते हैं, वो इन gaps को complete कर देते हैं. It is offered by private insurance companies and provides additional financial assistance for certain out-of-pocket costs that original Medicare doesn't cover, such as deductibles, co-payments, and co-insurances. Means ऐसे plans होते हैं ये जिसके अंदर ये supplement means ये कि additional कुछ supplement है उसके अंदर additional है. ओके, लाइक देयर आर एक प्राइमरी नॉर्मल एक पेशेंट की इंश्योरेंस होती है वो मेडिकेयर है. उसके बाद फिर कुछ काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मेडिकेयर के सप्लीमेंट प्रोग्राम्स लेते हैं, उनकी मीन्स एक सेकेंडरी इंश्योरेंस होती है. कुछ जो कवरेजेस जो मेडिकेयर नहीं कवर करता, देन दोज काइंड ऑफ प्लान्स आर गोइंग टू कवर दीज काइंड ऑफ बेनिफिट्स लाइक उसके डिडक्टिबल्स हैं, कोई को पेमेंट्स हैं, को इंश्योरेंसेज हैं. देन दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस विच आर गोइंग टू वर्क अंडर you can say that under the umbrella of that Medicare, original Medicare. ठीक है, Medicare के अंडर ही ये अप्रूव प्रोग्राम्स होते हैं, ये उनके ही अंडर काम कर रहे होते हैं. ठीक है, सो कुछ ऐसी जो पेमेंट्स रह जाती हैं जो मेडिकेयर कवर नहीं करती, कुछ ऐसी सर्विसेज जो मेडिकेयर कवर नहीं करती, कुछ ऐसी पेमेंट्स हो जाती हैं, तो वो ये प्लान्स जो होते हैं ये कवर करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द मेडिकेयर सप्लीमेंट और द मेडिकेयर प्रोग्राम्स. Okay, so the first one is supplemental coverage. So Medigap plans are intended to complement original Medicare. They help pay for some of the healthcare costs that original Medicare doesn't cover, making it easier to manage out of pocket expenses. ठीक है, काफ़ी सारे expenses जो पेशेंट अपनी तरफ से पे करते हैं, इसके अंदर ऐसे में जी है कि बेनिफिट्स होते हैं जो कि वो कवर कर लेते हैं मेडिकेयर के सप्लीमेंट प्रोग्राम्स. ऐसी कॉस्ट या ऐसी मीन्स ये कि पेमेंट्स जो मेडिकेयर ओरिजिनल मेडिकेयर जो कवर नहीं कर रहा होता, so these kind of a plans are going to cover those kind of a payments. Okay, so supplemental coverage होती है. Private insurance plans similar to Medicare Advantage, Medicare plans are also sold by private insurance companies approved by Medicare. However, Medicare plans are standardized and regulated by federal and state laws, meaning plan F from one insurer will offer the same benefits as plan F from another. ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी मीन्स ये है कि बेसिक इसका थीम ये है कि यहाँ भी हमेशा ये जो प्लान्स होते हैं सप्लीमेंट प्लान्स, दीज आर द प्राइवेट वंस. ओके, सो ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मेडिकेयर ही काम कर रहे होते हैं. जैसे कि मेडिकेयर एडवांटेज के अंदर प्लान्स होते हैं, डिफरेंट सारी जो इंश्योरेंसेज होती हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस, दे आर जस्ट गोइंग टू ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स. और ये स्टेट बाय स्टेट पे, और स्टेट के मीन्स ये कि अंडर द स्टेट या अंडर द फेडरल गवर्नमेंट ही काम कर रहे होते हैं. इसके अंदर ये है कि उनके जो लॉज होते हैं या प्लान्स के जो टाइप्स हैं
वो रिजेंबल करती हैं। लाइक प्लान एफ जो है वो सेम, अगर एक पेशेंट के पास है तो उसका जो किसी दूसरी स्टेट के अंदर रहता है तो उसका भी वही सेम प्लान होगा, सेम बेनिफिट्स उसके अंदर उसके भी होते हैं। ओके, सो ये प्राइ बेसिक ये है कि हाँ भी ये भी मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स की तरह मेडिकेयर सप्लीमेंट जो होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, सप्लीमेंट जो प्रोवाइड कर रही होती हैं वो भी प्राइवेट ही होती हैं। Okay, so third one is coverage gaps. Medicare policies cover various expenses, including deductibles for Part A and Part B, co-payments and co-insurances. They may also cover emergency healthcare during foreign travel. Okay, so these Medicare supplement plans are just going to cover Part A, Part B, co-payments. उसकी कोई co-payments हैं, मीन्स ये कि चेकअप के दौरान जो आपको फिक्स्ड फी देनी होती है वो, co-insurance अगर कोई co-insurance बन जाती है वो, दे मे ऑल्सो कवर एमरजेंसी हेल्थ केयर। ओके, ये इमरजेंसी के दौरान अगर कोई मीन्स है कि आपको इमरजेंसी है, लाइक यू if you are having different kind of a situation while the emergency one, then you can just get that kind of a benefit as well if you are having a Medicare supplement program. Okay, so no additional benefits. Unlike Medicare Advantage plans, Medicare policies do not typically offer additional benefits like dental, vision or prescription drug coverage. जिस तरीके से मेडिकेयर एडवांटेज जो प्लान्स होते हैं वो विजन, डेंटल, वेलनेस, फिटनेस इस तरह के प्रोग्राम्स को भी कवर करते हैं, बट मेडिकेयर जो सप्लीमेंट प्रोग्राम्स होते हैं ये इनमें से किसी को भी कवर नहीं करते। ओके, यू विल नीड टू एनरोल इन अ सेपरेट प्रोग्राम और पार्ट डी plan for prescription drug coverage if required. Agar if you're a citizen of the USA, then if you want that this Medicare supplement program is going to cover your prescription or drug coverage as well, then you need to enroll yourself in the Part D. But Medicare supplement programs are not going to cover those kind of plans. Okay, so the fifth one is provider choice. Medicare plans allow you to visit any doctor or hospital that accepts Medicare without being limited by networks. Referrals are not usually required to see specialist. इसके अंदर ये बेनिफिट है कि यहाँ भी इसके अंदर आपको रेफरल्स नहीं लेने पड़ते, आप किसी भी डॉक्टर से जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। ओके, मेडिकेयर प्लान्स अलाउज यू टू विजिट एनी डॉक्टर और हॉस्पिटल दैट एक्सेप्ट्स मेडिकेयर, मींस कोई भी ऐसा डॉक्टर जो मेडिकेयर की सर्विसेज को एक्सेप्ट करते हैं, मेडिकेयर की जो सर्विसेज हैं या जो बेनिफिट्स हैं दे आर जस्ट गोइंग टू ऑफर, देन यू कैन जस्ट गेट या एग्जामिन योरसेल्फ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ प्रोवाइडर। ओके, इसके ये बेनिफिट्स हैं कि हाँ भी आप किसी भी आपको रेफरल लेने की भी नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स के अंदर यू नीड टू गेट रेफरल्स यूजुअली। ओके, नेक्स्ट वन इज इनरोलमेंट। आप इसके अंदर इनरोल कैसे कर सकते हैं? To enroll in a Medicare plan, you must already be enrolled in both Medicare Part A and Part B. That is a similarity with that kind of a Medicare Advantage plan, that you need to be administered, you need to be enrolled in Medicare Part A and Part B if you are just having, if you just need to have this plan. Okay, so the next one is costs. So what kind of a costs are going to happen? While Medicare plans generally have higher monthly premiums compared to Medicare Advantage plans, इनकी जो premiums होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा high होती हैं rather than Medicare Advantage plans से। They can provide more predictable out of pocket costs since they cover more the expenses not covered by original Medicare. Yes, क्योंकि इनकी फीस इस वजह से ज़्यादा होती है, ये जो Medicare ओरिजिनल होती है उनकी जो कवरेजेस होती हैं ये उससे ज़्यादा ये है कि आपकी जो सर्विसेज होती हैं उनको कवर कर रहे होते हैं, therefore their premiums are quite higher. Plan standardization. Medicare plans are standardized in most states, offering different coverage options labeled by letters. इनके काफ़ी सारे plans होते हैं, उनकी types होती हैं, उनके label किया जाता है उन plans को. So Plan F, Plan G, the benefits for a specific letter plan are the same regardless of the insurance company selling it. Means कोई भी insurance की जो company sell कर रही होती है, means different insurance companies होती हैं, ठीक है, जो Medicare के supplement programs provide कर रही होती हैं, but अगर कोई आप plan लेते हैं, Plan F लेते हैं, Plan G लेते हैं, बट इनके जो बेनिफिट्स होंगे वो सेम होंगे। ओके, इंश्योरेंस हो सकता है कोई चेंज हो, लाइक डिस्को हो सकती है, कोई एटना हो सकती है, ठीक है, कोई और इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, बीसीबीएस हो सकती है, बट इसका मेन जो चीज़ होगी, मेन क्या होगी, यही होगी कि हाँ भी जो प्लान है, प्लान एफ है या प्लान जी है, उसके जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो सेम होंगे। ओके, इंश्योरेंस डिफरेंस हो सकती है बट प्लान सेम होता है। Okay, so these were the quite different kind of a things between like what is the Medicare Advantage plan and what are the Medicare Supplement plans. So now we are just going to focus on the differences कि यहाँ भी इनके जो focus करते हैं differences क्या हो सकते हैं. Let's see those kind of a things. Okay. सो डिफरेंसेस में आ जाता है टाइप्स ऑफ कवरेज, मीन्स इनकी जो कवरेज की टाइप्स हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है मेडिकेयर एडवांटेज. पार्ट सी प्लान्स आर प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान्स दैट रिप्लेस ओरिजिनल मेडिकेयर पार्ट ए एंड बी एंड ऑफन इंक्लूड पार्ट डी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक डेंटल और वीएन. इसके अंदर देखें काफ़ी सारे प्लान आ जाते हैं. पार्ट सी
ठीक है, जैसे वो कि प्राइवेट प्लान्स होते हैं, ठीक है। प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान्स दैट रिप्लेस ओरिजिनल मेडिकेयर, वो मेडिकेयर का जो ओरिजिनल होता है पार्ट ए और पार्ट बी, उनको ये है कि रिप्लेस कर देते हैं, और इसके अंदर पार्ट डी भी आ जाता है जिसके अंदर वीएन आ जाता है, प्रेस्क्रिप्शंस आ जाती हैं, ठीक है, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं। बट मेडिकेयर जो सप्लीमेंट है उसके अंदर वीएन या डेंटल इस तरह की कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। Medicare plans are supplemental insurance policies that work alongside original Medicare to cover gaps in the coverage such as co-payments, deductibles and co-insurances. Okay, ये काफ़ी सारे मीन्स ये कि वो गैप्स कंप्लीट कर रहे होते हैं जो कि मेडिकेयर ये जो ओरिजिनल है वो कवर नहीं करती, ठीक है। फिर ये इसके अंदर जो को पेमेंट्स आ जाती हैं या डिडक्टिबल्स हैं या को इंश्योरेंस हैं, दीज काइंड ऑफ supplement programs are going to cover these kind of things, but they are not going to replace the original Medicare. Okay, and they are also not going to cover prescription, wellness programs, or dental or V and these kind of things. Okay, so next we have over here costs. So Medicare Advantage generally has lower monthly premiums than Medicare plans, but may have higher out-of-pocket costs like co-payments, deductibles and maximum annual limits. इनके जो मंथली प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बट rather than Medicare plans but may have higher out-of-pocket costs like co-payments. इनकी जो co-payments होती हैं या deductibles होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, वो जो एनुअली होते हैं। ओके, अब इसके अलावा जो मेडिकेयर सप्लीमेंट है यूजुअली हैज़ higher monthly premiums but can offer more predictable out-of-pocket costs since it covers more the expenses not covered by original Medicare. ओके, इनकी जो प्रीमियम्स होती हैं वो ज़्यादा हाई होती हैं। मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स की जो प्रीमियम पेमेंट्स होती हैं वो लो होती हैं मंथली, और जो मेडिकेयर सप्लीमेंट प्रोग्राम है इनकी जो प्रीमियम्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू कवर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस विच आर नॉट कवर्ड बाय द मेडिकेयर वन। ओके, so next we see what we have over here. It's provider networks. Yes, Medicare Advantage often has a provider networks, meaning you may need to use doctors and hospitals within the plan's network to get the lower costs. Yes, if you wish that your costs of examining or diagnosis would be lower, then you need to go to those kind of a doctors, those kind of a providers which are enrolled or which are in network of that kind of a plan. If you go and seek yourself from other kind of a providers like out of network providers, then the cost of your examination, then the cost of your diagnosis would be very high. Medicare supplement programs, on the other hand, typically allows you to see any doctor or hospital that accepts Medicare without network restrictions. Yes, that is the advantage of this one, that if you are having the Medicare supplement program, then you can just seek any kind of a provider. But the main thing is that that kind of provider would be accepting the services that originally Medicare goes. Okay, so these were the differences about the provider network. And what are the prescription drug coverage? Medicare Advantage usually includes prescription drug coverage Part D as a part of the plan. So Medicare जो Advantage plans होते हैं वो Medicare Part D को भी cover करते हैं. Medicare supplement programs don't include prescription drug coverage, so you will need to purchase a separate Part D plan if needed. अगर आपको चाहिए कि हाँ भी आपको ड्रग्स और प्रेस्क्रिप्शन जो हैं वो भी आपको इंक्लूड कर लें, then you just need to purchase separately this plan, क्योंकि मेडिकेयर एडवांटेज इसको कवर करता है बट मेडिकेयर जो सप्लीमेंट प्रोग्राम्स हैं वो इस चीज़ को कवर नहीं करते। Next one is additional benefits. Yes, Medicare Advantage can offer extra benefits beyond original Medicare like dental, vision, hearing, and wellness programs. Okay, but Medicare Supplement doesn't offer additional benefits beyond what's covered by original Medicare. Medicare Advantage जो plans होते हैं वो काफ़ी सारे मीन्स ये है कि wellness, वीएन, ट्रांसपोर्टेशन भी वो ये चीज़ें कवर करते हैं, बट जो सप्लीमेंट होते हैं वो ये चीज़ें कवर नहीं करते। So these were the differences. Now we are just going to see that what are the similarities between these two plans. Okay, Medicare Advantage plans और Medicare Supplement programs जो होते हैं, plans होते हैं, उनके अंदर similarities क्या क्या हो सकती हैं? Here you go. So original Medicare basis, both Medicare Advantage and Medicare Supplement plans work with original Medicare Part A and B. मीन्स वो दोनों हॉस्पिटल पार्ट ए, हॉस्पिटल पार्ट बी, मेडिकल, ये जो एडवांटेज प्लान्स हैं या सप्लीमेंट प्लान्स हैं मेडिकेयर के, ये उनके साथ ही काम करते हैं। मीन्स दे आर जस्ट गोइंग टू वर्क अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ओरिजिनल मेडिकेयर. Private insurance plans both are offered by private insurance companies approved by Medicare. मीन्स ऐसी जो भी इंश्योरेंसेज होती हैं जो अप्रूव्ड बाय मेडिकेयर होती हैं वही ये प्लान्स जो है ना वो प्रोवाइड ऑफर कर सकती है.
Compatibility with original Medicare both allow you to use services covered by original Medicare, though the coverage details and cost can differ. Yes, मीन्स ये है कि ओरिजिनल मेडिकेयर तो ऑलरेडी कवर कर ही रही होते हैं ये प्लान्स, ठीक है। उसके साथ ये है कि कुछ के अंदर एडिशनल प्लान्स हैं, कुछ के अंदर एडिशनल प्लान्स नहीं है, और जो बेनिफिट्स हैं वो हैं, कुछ के अंदर नहीं है। ओके, जैसे हमने देखा मेडिकेयर एडवांटेज जो प्लान्स होते हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू कवर डिफरेंट काइंड ऑफ एडिशनल बेनिफिट्स लाइक वीएन, ट्रांसपोर्टेशन, वेलनेस। ओके, सो ये प्लान्स कवर करते हैं, प्रेस्क्रिप्शन पार्ट डी को भी कवर करते हैं, बट मेडिकेयर सप्लीमेंट प्लान्स आर नॉट गोइंग टू कवर दीज काइंड ऑफ बेनिफिट्स। So, enrollment and eligibility, both types of plans are available to individuals eligible for Medicare, primarily those age 65 and older, and some in cases younger individuals with specific disabilities. Yes. सो ये मीन्स ये है कि उन्हीं को ही मिलते हैं जो कि मेडिकेयर के प्लान्स जो हैं, जिनको जो ऑलरेडी रखते होते हैं या जिनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मेडिकेयर के प्लान्स दिए होते हैं। सो इफ़ यू आर यंगर एंड यू आर डिसेबल, देन you can just get these kind of plans, or you can enroll yourself in these kind of plans. Okay, so these were the similarities between these two plans. Now we are just going to see the considerations, like when you are just going to opt these kind of a plans, so what kind of a key benefits or key points you just need to focus. So the first one is healthcare needs. You need to consider your health status, required services, and frequency of doctor visits. If you are just having regular or frequent visits, then what kind of a plan you should be using? That would be quite helpful for Medicare supplement program. Okay, so in that kind of a program, you don't need to get different kind of referrals from any providers, and you just need to seek yourself or examine yourself from those kind of providers which are just going to follow the plans of the Medicare, original Medicare. Okay, आप अपनी देखें कि हाँ भी आपको कौन कौन सी मजीए के कॉस्ट कितनी पड़ती है। आप रेगुलर विजिट्स करते हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी है, इफ़ यू आर जस्ट हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिजीज दैट नीड्स रेगुलर चेकअप्स, देन यू जस्ट फॉलो different kind of a plans of the Medicare supplement. Budget, evaluate monthly premiums, deductibles, and potential out-of-pocket cost. Yes, before selecting any kind of a program, you just need to consider yourself that what kind of a premiums would be there, would be for that kind of a program, what kind of a deductibles or co-payments. So before selecting or before choosing a plan, you just need to read all the details of that kind of a plan. Okay. Next is provider choice. Determine if you prioritize having a broader choice of doctors and hospitals. Yes, you have to focus that if you are just going to have a broader range of providers, or you just need to sometimes have a lower range. Okay, so देखा जाएगा कि हाँ भी अगर आपको काफ़ी सारे डॉक्टर से एग्जामिन कराना पड़ता है, तो उस तरीके से आप मेडिकेयर सप्लीमेंट प्रोग्राम चूज़ करें। अगर आप ये है कि कहते हैं कि हाँ भी मतलब नॉर्मली कोई इस तरह की कोई बीमारी नहीं है जिसके अंदर आपको किसी दूसरे डॉक्टर्स को चेक करवाना पड़ता है, तो आप इसका मेडिकेयर एडवांटेज प्लान को ही ले सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कवरेज प्रेफरेंसेस. Assess if you need additional benefits like dental, VN or prescription drug coverage. Okay, अगर आपको dental, VN और prescription की coverage भी चाहिए, then you just need to find, or you just need to get the Medicare Advantage plan, because Medicare Advantage plans are going to cover Part D, Part A, Part B, and also there are other wellness programs, like you can say the other wellness benefits, VN, dental, these kind of plans, these kind of benefits are also being covered by Medicare Advantage one. On the other hand, the Medicare supplement programs are not going to cover these kind of benefits. So you have to be careful while choosing between these two plans. Okay, so deciding between Medicare Advantage and Medicare supplement plans hinges on personal preferences, healthcare needs, and financial considerations. It's advisable to thoroughly compare plans and their specifics to determine which aligns best with your situation. Yes, you should be careful while choosing different kind of a plans, like what kind of a needs, what kind of a provider needs, what kind of examination needs you just need to follow these kind of rules. Okay, so before checking yourself, before selecting a program, you just need to focus that what kind of a program you should choose. So there would be different scenarios, there would be different details, like आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भी आपको आपकी कोर्स कितनी पड़ती है, आप रेगुलर चेकअप करवाते हैं कि नहीं करवाते होते, आप ये है कि कोई ऐसी बीमारी जिसके अंदर आपको रेगुलर चेकअप करवाने पड़ते हैं, तो इसलिए आपको फिर ये है कि मेडिकल सप्लीमेंट चूज़ करना पड़ेगा. If you are not on regular checkups or not on regular diagnosis, then you just need to Medicare, have a Medicare Advantage plan. So I have just streamlined and provided all the details between these two differences, okay, between these two Medicare Advantage and Medicare supplement programs. So while selecting any kind of a plan, you just
नीड टू वॉच दिस वीडियो। ओके, इसके अंदर सारी वो डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दी हैं, जिससे ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भी कौन सा प्लान आप ऑप्ट करें, कौन सा प्लान आप लोग ऑप्ट ना करें। सो while selecting any kind of plan, you just need to focus on these kind of benefits, okay, and your financial needs. So thank you so much once again for watching me on my YouTube channel Medibil Pro. If you have any kind of a questions, concerns, or troubles while reading out these codes, then you guys can let me know. I'll get back to you soon. Okay, so once again, if you have any problem, then please reach out to me as soon as possible. I will get back to you on this one. Please take care of yourself and your family. Inshallah, we'll meet in the next lecture with different topic. So stay blessed. Allah Hafiz.